मुझे सर ऑब्जेक्टिव वाले में. Which one you have a doubt? पर HCV ऑब्जेक्टिव. ओके ओके ऑब्जेक्टिव का ठीक है. पहले रुक जाओ. फर्स्ट जो है ये वाला एक होमवर्क को पहले भेजता हूँ तो भूल जाऊंगा. लेट मी सेंड. ओके गाइस, फिर जो है यस होमवर्क का विल डिस्कस. श्रावणी यस हाँ विल डिस्कस द होमवर्क. लास्ट क्लास में जो है वी हैव डन टिल व्हिच एग्जांपल? 12th solved तो example. कॉनिकल वो पेंडुलम वाला. यस यस वी आर डूइंग कॉनिकल. हाँ तो ठीक है, थोड़ा थ्योरी आगे करते हैं. वी विल डिस्कस दोस क्वेश्चंस. और यू वांट टू डिस्कस विद द बिगिनिंग क्या? यू वांट टू डिस्कस अभी? थ्योरी करा लो. ओके पहले थे. Sir, we can do some theory, then we can do the discussion. Yes ओके चलो ठीक है. फिर किसी का कोई डाउट्स अभी नहीं है, फिर वी कैन डिस्कस अगेन बाद में. श्रावणी फिर विल डिस्कस लेटर ऑन. ठीक है सर. चलो ठीक है. तो वी आर डूइंग कोनिकल पेंडुलम. कोनिकल पेंडुलम. सो कोनिकल पेंडुलम में गाइस वी हैव डन दिस इक्वेशंस. आई गेस ये वाला जो है ऐसा था. ये वाला एंगल विद दिस इमेजिनरी वर्टिकल लाइन वाज थीटा. दिस इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कुलर मोशन. यहाँ से स्ट्रिंग इज टाइड. पॉइंट ऑफ सस्पेंशन मास m. दिस रेडियस r. फोर्सेस mg. t को हमने रिजॉल्व करके कर लिया था. And we got this as this angle theta naught, t cos theta naught. और इधर जो है t sin theta naught. So रेडियल डायरेक्शन में क्या इक्वेशन आया था गाइस? रेडियल डायरेक्शन t sin theta naught. Sir, we done this, no sir? is equal to mv naught square by r. Yes, we have done this one. Omega square r. mv square by r या omega square r whatever. हाँ. और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या आया था नयन इसमें? So t cos theta naught is equal to mg. Yes, t cos theta naught minus mg is equal to m into 0. t cos theta naught is equal to mg. यहाँ तक तो we have done. और even we divided इसको दोनों equations को if we divide, so यहाँ से जो है what we'll get guys after dividing? और tan theta naught is equal to omega square r by g. Okay, so यहाँ तक आ गया. Guys यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं ना. See, this is radius r, this is l, तो r will be l sin theta naught. So ठीक है. t l is the length of the string. हाँ guys ये पूरा. r is this radius. t sin theta naught. m omega square r की जगह l sin theta naught. हाँ. This goes away. So t is equal to m omega square l. Correct guys ये वाला. So t is equal to m omega square l. l is the length of the string. r is the radius of the circular motion. और हमारे पास एक और इक्वेशन ये आ गया था. हाँ tan थीटा वंश क्या आया था? ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर r by g. ओके. सर ये हर टाइम निकालना या फिर याद रख सकते हैं? ओ ये वाला इसमें जो है यस दिस आई डोंट, मेरे को याद तो नहीं है. आई डू दिस वे. Derive it each time. Like it'll only take like 2 steps or something. यस हाँ. तो ये आपने क्या किया? मतलब मेरे को वो r is equal to l sin theta naught नहीं समझा. ओ ये वाला. So who can explain guys? ये r is equal to l sin theta naught. So it was L sin theta not because Sin theta ना. Sin theta is opposite by hypotenuse. yeah. Right, sir. Thank you. Opposite is r, hypotenuse is l, so r is equal to l sin theta naught. Correct?
ऐसा। हाँ, अब जो है tan थीटा को sin थीटा नॉट बाय cos थीटा ओमेगा स्क्वायर बाय g r इज l sin थीटा नॉट। ये यहाँ से गया। सो गाइस यहाँ से ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू G/L cos theta. ओमेगा स्क्वायर इज g बाय l cos थीटा और ओमेगा विल बी रूट ऑफ g बाय l cos थीटा। ठीक है गाइस, अब जो है इसमें सी टाइम पीरियड, गाइस ये अपने डिस्कस नहीं किया है। टाइम पीरियड ना, इसका डेफिनेशन होता है टाइम टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। टाइम पीरियड इज टाइम टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनटू टाइम। एक रेवोल्यूशन के लिए, एक रेवोल्यूशन में एंगल विल बी 2 पाई एंड एक रेवोल्यूशन का टाइम इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड टी। सो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2 पाई बाय ओमेगा। चलो ठीक है, टाइम पीरियड ये आ गया। और जो है यहाँ पर जो है वी गॉट, और ओमेगा कितना आ गया था यहाँ पर। तो टाइम पीरियड अगर इस डेटा का निकालना है, कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड, सो टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम टाइम पीरियड टी इज व्हाट, 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा कितना निकाला है हमने, रूट ऑफ g बाय l cos थीटा। So this will be root of g by l cos theta. तो ये तो हुआ टाइम पीरियड। एंड गाइस आपको कभी फ्रीक्वेंसी वगैरह चाहिए तो फ्रीक्वेंसी भी अपने डिफाइन किया नहीं है इस हम लोग फ्रीक्वेंसी। केमिस्ट्री में किया 1/time period. 1/time. यस, ये वाला जो है 1/time। चलो गाइस, यस हाँ, प्लीज कॉपी दिस वन। यू एवरीबॉडी अंडरस्टूड ना? सर वो राइट हैंड साइड कॉर्नर में है ना, tan थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r बाय g के बाद क्या किया आपने? ओ, फिर tan थीटा को लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के कांसेप्ट से sin बाय cos। सर एक सेकेंड, आपको n ओमेगा स्क्वायर l का ओमेगा स्क्वायर r कैसे आएगा? Oh yes, Nan, how did you get that one? क्या सर, r इज l sin थीटा कैसे आया? Yes, हाँ, यहाँ से ये वाला स्टेप कैसे आया? हाँ, तो बेसिकली sin थीटा नॉट इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो फिर sin थीटा नॉट विल बी लाइक r इज द ऑपोजिट साइड एंड हाइपोटेनस इज l, तो फिर उसको ट्रांसपोज करेंगे तो r विल बी l सर sin, वो नेक्स्ट स्लाइड। और उसको सब्स्टिट्यूट किया है उधर, ओमेगा स्क्वायर r के बदले ओमेगा स्क्वायर l sin थीटा नॉट लिखा, तो फिर sin थीटा नॉट कैंसिल हो गया। You understood, Ramni? तो उसके थर्ड स्टेप से फोर्थ स्टेप कैसे आए? ओ ये वाला हाँ, ये वाला तो अपने लास्ट क्लास में डिराइव किया था। अच्छा सर, वो डायरेक्ट उठाया क्या आपने? यस हाँ। ओके सर, वही पूछ ली। सर वो सर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू g बाय l cos थीटा कहाँ से है? ओ यहाँ ये वाला समझ में आया, ये वाला स्टेप। हाँ सर। हाँ, फिर उसके बाद इसको ये वाला स्टेप में करेक्ट, साइन बाय कॉस, हाँ सर। और आर की जगह फिर एल साइन थीटा। अच्छा ओके सर, समझा। हाँ, चलो ये वाला हो गया। नेक्स्ट पेज, ओके। तनिष, ये वाला अंडरस्टूड? तनिष कहाँ चला गया? Not in the meeting. ओ अरे, तनिष is not there.
वो इसके पहले लेक्चर में he was not there, guys. No, sir. Sir, अरे he was there. Sir, He he was was there. there, but he was not talking. So slide number 1. Sir, he was talking. He was asking doubts. अरे हाँ. Yes, sir. Next in the slide. last class, he was present and also. Sir, can you see slide number 1 for a second? Okay, okay. Yes, and the second one also. Second one. Thank you, sir. Sir, one slide. Slide 1. Okay. Yes, sir. सर ये फॉर्मूलेज याद रखेंगे तो बेटर है ना? No. सिर्फ तो रेडियल और वर्टिकल डायरेक्शन में लिखना है. रेडियल डायरेक्शन में t sin theta is mass into radial acceleration और वर्टिकल वाला t cos theta is mg. Sir, next slide. Next slide. Okay. Yes, Chitraksh. सर अगर थीटा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तब फिर cos थीटा तो 1 हो जाएगा, फिर उस केस में क्या होगा? ओ फिर कोनिकल पेंडुलम कैसे होगा? हाँ, तब फिर नहीं होगा. ओके, तो कोनिकल पेंडुलम नहीं होगा. यस. तो सर सिंपल पेंडुलम हो जाएगा. नो, सिंपल पेंडुलम और इसके बीच में हमने देयर इज अ डिफरेंस, स्टार्क डिफरेंस इज देयर. लाइक वी हैव रिटन द 2 पॉइंट्स गाइस. याद है क्या क्या डिफरेंस था? वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है. One was uniform circular motion, other was not. हाँ, वो तो डिफरेंट हो गया चिताक्ष. तो सर थीटा इक्वल्स टू 0 के लिए नहीं होगा. थीटा इक्वल टू 0 में फिर यार वो थीटा इक्वल टू 0 ही बोल दिया, मतलब फिर वो कैसे हो गया ना. Basically, in conical pendulum, you give it some like Some theta, velocity yes. in the perpendicular direction to the acceleration also. Like Correct. हाँ, which we have to take. Sir, in aside. that case, we have to use different calculus, no, sir, if theta tends to 0. थीटा जो है थोड़ा सा रहेंगे ही ना, तो फिर कोनिकल पेंडुलम कैसे होगा? Sir, if we take d theta, sir. No, like this, like very small radius. Okay, sir. Yeah. So next slide. This one done. The last point, sir. Oh. Sir, 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 no need to remember this. Now we can derive this from as per question. Yes. Okay. Now, so ठीक है, we take an example now. So guys, this is a table. This is a table here. और यहाँ पे say you have a particle. और इसको guys, इसको velocity दोगे तो क्या हो जाएगा? How will this particle move? Suppose ये mass है. Linear motion. Straight line motion. So इसको अगर circular motion में घुमाना है तो क्या करना पड़ेगा guys? If you want to Radial action. नहीं, अगर कि अपन चाहते हैं कि सर्कुलर मोशन में घूमता रह जाए, सो क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? Radial action. डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा. यस. हाँ. तो स्ट्रिंग लगाना पड़ जाएगा. यस. तो स्ट्रिंग लगा देते हैं भाई. ये स्ट्रिंग लगाया. स्ट्रिंग को खाली छोड़ दिया, कुछ नहीं किया. एक एंड यहाँ बांध दिया, एक एंड बांध दिया, वेलोसिटी दिया, तो क्या हो जाएगा? ये स्ट्रिंग के साथ साथ भाग जाएगा, राइट? Sir, we have fixed one end of the string, sir. Okay, so you have to fix the one end of the string. Do you agree? Yes, sir. Then only it will become circular motion. Okay, so you have to fix the one end. Now, say this mass is m1. I am not fixing it. I have made a hole in the table like this. So this is my string, blue color string. This is the blue string. I am passing this string through the hole. And now I have to hold it, na? Otherwise it will go away. Yes, sir. Okay. So instead of holding it, I am suspending a mass here. Correct? I can do this. Am I right? Yes, sir. But
Yes, sir, yes, sir, correct. Now this length from center to M1 is L1. So the question is, find V0 such that M2 remains in equilibrium M2 की वैल्यू बतानी है so that it remains in equilibrium. V0 speed, हाँ, V0 speed is such that कि वो जो है equilibrium में रहना चाहिए वहीं पर. So I have this hole. अब यहाँ से मैंने string pass किया. I don't want to tie this. मैंने hole बनाया and then I passed this string through this hole and got a mass suspended here from this point. So, what is that? Like, it's just a hinge? No. यहाँ पर table में hole है ना? Table में there is, you can make a hole in the table, right? Okay. So it's like और ये string, yes, और ये string को उससे ले गए, hole से pass कराया और नीचे ले गए, right? Okay. Sir, we can say that MV square by Sir, R. ideal string, sir. हाँ सब ideal है ना? Yes, it is an ideal string. Snail, final answer बताओ. Deal. Sir, root of Sir, M2 V is G equal into to N. root of GR. Devi, Root of हाँ. M2 G upon Devi, हाँ. Root of M2 G into L upon M1. Okay, Devi, how did you get this one? Sir, I Sir, have first drawn we the have to FBD draw of the FPD M2. of M2, sir. Okay, FBD of M2 Tamrai, Devi, okay. Sir, This is upwards clear. tension and downwards M2G. Then So M2 from this we'll get that T is equal to M2G. vertical direction. So you want to write T minus M2G is equal to M2 into 0. 0. So Sir, T is equal to M2G. Okay. Yes. Now? So now we Now have to draw the FPD of M1. Okay, M1. M1 क्या है? Hole है ना आप बोल रहे हो? ये वाला M1 है. Yes. तो फिर क्या मास है उसका? मतलब वो थोड़ी ना कोई बॉडी है. Yes, Tamrai, can you explain? So what was her question, sir? Like what is the situation here? The whole situation, the setup. You can explain. The setup is such a way that M2 does not move and M1 moves in a circular path with a velocity V0, and we have to find that V0 such that the M2 does not move. But sir, what is M1? M1 is an object. Okay, got it. Thank you. Sir, is the answer LM2G upon M1? Like root. I guess yes. Sir, root of Root M2G upon M1. Yeah. Okay, guys. अरे पहले तो इसका मेथड बताओ कैसे करना है. M1 पे क्या करना है? Sir, on M1 there will be a tension of M2G. अरे tension M1 is the center radial. T. Yes. So tension equal. M1 So कौन सी tension डायरेक्शन? is equal to V square by R. अरे you are not explaining properly. You have to explain that you have to apply Newton's law in radial direction. Yes, sir. Newton's law radial direction में क्या equation आएगा? T is mv square. V square. Yeah, okay. Or V0 mv square by R is L1. Sir, Then after this, guys, इसमें M1 पे you don't need to apply Newton's law in vertical direction. It's of no use to us. We don't want to find the normal reaction by the floor, by the table on M1. Huh? Now उसके बाद क्या करना है? Now Sir, we have to take M2G Newton's law on M2 to get T is equal to M2G because it's an equilibrium. Yes. So now we can equate it. Yes, M2G and M1 V0 square upon L1. Is this correct, Damrai? Yes, sir. Then we have to take it right hand side and then take the root.
Yeah. Okay. Guys, ये वाला सबको agree? Yes. 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 Yes, yeah. Okay, so ठीक है. चलो फिर ये वाला हो गया तो next कर लेते हैं. ये वाला everybody had copied ना this one? Yes, sir. Okay. Just a minute. सर हाँ, द्राक्ष. सर अगर फ्रिक्शन भी रहता था तब फिर वो T प्लस F इक्वल्स टू M1 V0 स्क्वायर बाई L1 हो जाता था ना. फ्रिक्शन रहेगा तो यार रेडियल फिर काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा ना. मोशन है भाई, रिलेटिव मोशन है इसका. करेक्ट. ओके सर. यस. वो तो फिर स्लो डाउन हो जाएगा, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा क्वेश्चन, काफी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा. Then it would only remain in equilibrium for 1 second or something. फिर वो हाँ उस फ्रिक्शन के कारण ना कॉम्प्लिकेट हो जाता है, तो उसको रहने देते हैं अभी. नेक्स्ट अब जो है सेम टेबल गाइस, वही वाला टेबल, स्मूथ टेबल. सेम टेबल हियर, सेम वही वाला मास जो सर्कुलर मोशन में था m1, राइट. ये वाला m1, this is mass m1 in circular motion, और इसका एंगुलर वेलोसिटी गिवन है गाइस. ये वाला एंगुलर वेलोसिटी ω1 ये गिवन है. टेबल में देयर इज अ होल, होल में से ये स्ट्रिंग का लेंथ फ्रॉम सेंटर टू m1 इज L1, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था वही क्वेश्चन. नाउ हियर द स्ट्रिंग कम्स डाउन, ये वर्टिकल लाइन. अब स्ट्रिंग को जो है आई गॉट दिस वे, यहाँ पे मास m2. Snail, what I am trying to do, can you make a guess? Conical pendulum. Conical pendulum. So I giving a velocity. Now this mass m2 is moving in a conical pendulum, and this length of the string from here, ये blue वाला length, is L2. इसका angular velocity is ω2. So अब ये जो है मोशन में है, तो you want to find the ratio of L1 by L2. Yes, ये question understood ना? चलो everybody. चैतन्य? Yes, sir. हाँ. सर उधर टेबल के बीच में होल इसमें भी किया है ना? Table, yes, we have, there is a small hole here in the table, and through that hole we have passed the string. जैसे last case में था वैसे ही था. यहाँ पे तो m2 को लटका दिए थे. यहाँ पर we are causing m2 to move it in a circular motion. So here a string is having that string is having mass, or it is ideal, sir? Ideal string, ideal string. Okay, sir. Okay guys, 1 minute you try this one, 1 minute I'll be back, 1 minute.
यस धीर. So 1 minute, almost done. सर आंसर 1 है क्या? अरे 1 कैसे आएगा? You have to give your answer in terms of the given quantity. सर मेरा m2 ओमेगा 2 स्क्वायर अपॉन m1 ओमेगा 1 स्क्वायर आ रहा है. तो मेरा उसका उल्टा आ रहा है. वंश उल्टा आ रहा है. सर m1 ओमेगा 1 स्क्वायर अपॉन m2 ओमेगा 2 स्क्वायर आ रहा है. हाँ नहीं सर सर मैं सर सेम है, यही आ रहा है अभी सर. गलती से मैंने अभी कैंसिल जो है कर दिया था इसलिए वो 1 बोल दिया. ओके. सर उसने पहले तो चलो m2 और m1 को कैंसिल कर दिया है गलती से. इसमें जो है न्यूटन्स लॉ से सॉल्व करना पड़ेगा. यस सर. न्यूटन्स लॉ m1 पे क्या आएगा बताओ? m1 पे कौन से डायरेक्शन में लिखोगे? सर Radial. रेडियल. रेडियल. सर रेडियल डायरेक्शन इन एक्स. ओके गुड सीमांत. रेडियल डायरेक्शन में क्या इक्वेशन आएगा बताओ? F net is equal to FR is equal to mass into acceleration R. हाँ फिर T is equal रेडियल to फोर्स कितना आएगा? T is equal to हाँ M into ओमेगा ओमेगा 1 स्क्वायर L1. ठीक है. अब यहाँ पर इसमें भी रेडियल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखेंगे. से ये वाला रेडियस कुछ r2 है. से दिस एंगल इज θ2, some θ2. It's the same string only, no? Which is Same like coming. Correct, same string. So t sin θ2. So guys इस पे रेडियल डायरेक्शन में फोर्स क्या आएगा यहाँ पर? रेडियल डायरेक्शन M2 ओमेगा 2 L2. सॉरी और मास. अरे t sin θ2 m2 radial acceleration will be omega 2 square r2. r2 will be क्या हो जाएगा? L2 sin θ2. L2 sin θ2. So t sin θ2 और ये वाला L2 sin θ2. फिर यहाँ से ये वाला sin θ2 हटा देते हैं. दोनों का यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी m2 ओमेगा 2 स्क्वायर L2. दोनों का t इक्वेट कर देंगे. m1 ओमेगा 1 स्क्वायर L1 m2 ओमेगा 2 स्क्वायर L2. L1 by L2 we want to find. So is the answer W1 square, sorry, W2 square upon W1 square times M2 upon M1 times G? Correct. हाँ. m2 by m1 into omega 2 by omega 1 का whole square. Guys, you all understood everybody? Yes sir. Okay. चलो ये हो गया. So सर एक सेकंड. okay. डन सर. Done. हाँ. सर 1 मिनट. यस सर हो गया. Okay. So guys, ठीक है. नॉन इनर्शियल फ्रेम. तो अभी तक हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे. इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम. तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में गाइस जो है स्यूडो फोर्स. यस यहाँ पे सूडो फोर्स आएगा. सूडो फोर्स ठीक है. उसका मैग्नीट्यूड, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम और उसका डायरेक्शन ऑपोजिट टू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम. ये हमने पढ़ा है. दिस वी हैव डन. ऑपोजिट टू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम. ओके चलो ठीक है. सो गाइस पहले तो फ्रेम डिसाइड करना पड़ेगा. सो नाउ लेट्स से जो है यही वाला केस ले लेते हैं. जैसे ये वाला से यू हैव अ हॉरिजॉन्टल प्लेन
फ्रेम कौन सा लेना है दैट वी आर डिसाइडिंग. सो एक पार्टिकल ऐसा है, इसमें अपने ये स्ट्रिंग बांधा, दिस इज द सेंटर एंड पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन. सो एक ऐसा फ्रेम लेना है, नॉन इनर्शियल फ्रेम, जिसपे पार्टिकल रेस्ट पे दिखाई दे. तो गाइस फ्रेम कैसा होगा जिसपे रेस्ट पे दिखाई दे पार्टिकल? तो ऐसा सोचेंगे कि भाई इस पार्टिकल के ऊपर एक पंखा है, लाइक फैन, इट्स अ सीलिंग फैन. ये सीलिंग फैन, इस सीलिंग फैन पे ये ऑब्जर्वर बैठा हुआ, और ये जो है जितने स्पीड से ये पार्टिकल घूम रहा है, ये सीलिंग फैन भी वही रेट से घूम रहा है. और हमेशा जो है ये ऑब्जर्वर विल फाइंड दैट दिस पार्टिकल इज ऑलवेज बिलो इट. तो इसके रेस्पेक्ट में इसकी स्पीड 0 हो जाएगी. एंड जो है ये ऑब्जर्वर, नाउ दिस ऑब्जर्वर विल अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ ऑन दिस बॉडी इन नॉन इनर्शियल फ्रेम. गाइस ये वाला अंडरस्टूड? सो अब न्यूटन्स लॉ ये ऑब्जर्वर लगाएगा. अभी तक कौन लगा रहा था? ग्राउंड वाला. So we will solving the problems in the ground frame. Now we will go for non-inertial frame. We can solve problem in non-inertial frame also, as some students are suggesting. So ठीक है, उसके लिए we are trying to learn the concepts. उसका concept एक बार just discuss कर रहे हैं. यहाँ तक तो everybody understood ना guys? Frame कैसा लिया है? Yes, sir. Now in this frame. Sir, हाँ. sir, this is called non-inertial frame because the force is acting on this body, right? No. Frame is non-inertial if it has an yes sir, acceleration. it is accelerating. Yes. So in this frame, object will appear to be at rest. Will appear to be at rest. Object उसके रेस्पेक्ट में जो है ऑब्जेक्ट रेस्ट पे दिखाई देगा. ओके. सो गाइस जैसे हम अब यहाँ तक आ रहे थे, हाँ, जैसे कोई सा भी प्रॉब्लम सर्कुलर मोशन का, इससे ये वाला प्रॉब्लम, कोई सा भी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे थे, तो इसमें जो है क्या क्या फोर्सेस आता था? ये mg रियल फोर्स, normal reaction from the surface, n surface real force, tension ये वाला जो है ये भी real force. Tension force was acting towards the center, and tension को हम क्या बोलते थे? Centripetal force. Tension was also called as here because it was acting towards the center. Centripetal force. It was providing the necessary centripetal acceleration. So इसको हम centripetal force बोलते थे, ठीक है? So centripetal force is also a real force. So this we have done. Now, अब जब यहाँ पर इस बॉडी पर अगेन सेम mg तो दिखाओगे ही, और n भी दिखाओगे, एंड देन ये स्ट्रिंग का फोर्स, टेंशन इज सेंट्रीपिटल फोर्स, ये भी दिखाओगे. टेंशन इज सेंट्रीपिटल, सर रियल फोर्स, ये भी दिखाओगे. नाउ इन एडिशन टू द रियल फोर्सेस, सो यू विल हैव टू अप्लाई, यू हैव टू शो कौन सा एडिशनल फोर्स? सूडो फोर्स. अब जो है भाई फ्रेम लिया है, फ्रेम भी सर्कुलर मोशन में है. सो ये फ्रेम, दिस फ्रेम इज इन सर्कुलर मोशन. तो सर्कुलर मोशन तो वही स्पीड से जा रहा है, तो उसका रेडियल एक्सेलरेशन. सो दिस फ्रेम इज एन एक्सेलरेटेड फ्रेम. तो सूडो फोर्स आएगा. सूडो फोर्स किधर आ जाएगा? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. So pseudo force here will be mass of the object into acceleration of the frame. कौन सा हो जाएगा? रेडियल. और उसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा? भाई इसका एक्सेलरेशन किधर होता है? टुवर्ड्स द सेंटर. Yes sir. So here pseudo force, here pseudo force will be shown away from center in FBD, away from center. Pseudo force will be shown away from the center. This pseudo force, this pseudo force away from center
is called as, हाँ guys, क्या बोलते हैं बताओ? Pseudo Sir, force. centrifugal force. Yes, yes, correct. Centrifugal force. So centrifugal force is pseudo force, huh? Or centripetal is a real force. Centripetal. Pseudo force is centrifugal force. Centrifugal force is pseudo force, guys. Guys, ये वाला सबको समझ में आ रहा है क्या? तो आप एक बार ये जो सिचुएशन बनाया वो रिपीट कर सकते हो? मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा वो हमने ब्लू में क्या किया है? Yes, frame. Ruchir, can you explain how did we select the frame? So how did we select the plane? Like the observer Frame. The frame. Non-inertial. So Non-inertial frame. Non-inertial observer. So we assume that the observer is like moving at the same angular velocity as the object on like a separate plane. So from his standpoint, the object is at rest. Like like it has zero velocity from his perspective because he's moving at the same angular velocity. Yes, I understood. Thank you. हाँ, उसके ऊपर एक ब्लेड बनाया और सेम रेट से जाता हुआ. हाँ. Yes, हाँ. सॉरी सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी सर. एक बार सर शॉर्ट में सर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या था वो बताओगे क्या? वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू? नहीं सर, सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब क्या है सर? मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी आप जब. Okay. Nan, can you explain what is centripetal force and centrifugal force? Centripetal force was the one we were doing till now, like the real forces which are acting towards the center of the circular motion. Real force acting towards the center. And centrifugal. The pseudo force will act away from the center, and so it will be the centrifugal force. Correct. मतलब सर राइट की तरफ होगा क्या वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? हाँ, centrifugal force is away from the center. हाँ, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा ऐसा कुछ? Yes, because acceleration of the frame is towards the center. तो pseudo force किधर जाएगा? Away from the center. Okay, sir. So like first in NLM we were saying that it like acts away from like the velocity or acceleration, but here it's not that way, right? Here it's just away from the center. Acceleration is towards center. हाँ, यहाँ पे फिर इसलिए pseudo force away from the center, correct? हाँ, got it. Thank you. So is that why they say that centrifugal force is like a false force? Pseudo force बोलते हैं, not false, मतलब समझ लो, pseudo force. So centripetal force is real, but centrifugal force is pseudo force. Yes, imaginary force. Yes, centrifugal pseudo force. And so if there is a acceleration, so after the direction of pseudo force will change, right? Dhruv, what you're saying again? Please again. So I'm saying if there is tangential acceleration, then the direction of pseudo force will change. I mean the centrifugal force will change, right? No, centrifugal force is always away from the center. मतलब pseudo force अगर लेना है, मतलब तुमको कैसा motion का analyze करना है? No, sir. So what I'm saying is, if there is tangential acceleration, फिर direction will be affected या नहीं? नहीं, always away from the center. Always away from the center. Yes. Okay, sir. I think he's asking of non-uniform circular motion. Yes, sir. हाँ, non-uniform circular motion में भी देखो एक instant पे लगाओगे, right? You will apply
at instant. तो उस instant का जो भी speed होगा v square by r रेडियल एक्सेलरेशन हो जाएगा, तो सूडो फोर्स उस इंस्टेंट पर जो है ऐसा रहेगा एंड इट विल बी वेरिंग ऑल द टाइम. Okay, sir. पर उस इंस्टेंट के लिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा ना नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए. नहीं, अपन तो सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल की बात कर रहे हैं. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर. तो सर मतलब ये हम लोग ऐसा रट्टा मार लेंगे कि मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम सेंटर और Yes. मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. And sir, centripetal force acts in the center of the circular path. towards the center. Towards the center of the circular. Centrifugal force away from the center, correct? सर पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए जब एक्सेलरेशन होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तो ये जो सूडो फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल वो है m into a एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम. तो a नेट लेंगे क्या? नहीं, m into फ्रेम तो सर्कुलर मोशन में है ना, उस इंस्टेंट का स्पीड जो होगा रेडियल एक्सेलरेशन, तो mv स्क्वायर है. हमेशा के लिए रेडियल एक्सेलरेशन ही लेना है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तो भी. करेक्ट, क्योंकि हम रोटेटिंग फ्रेम ले रहे हैं. यस, उस इंस्टेंट का स्पीड ले लेंगे. ओके सर. नाउ अब जो है यही सम्स को हम डिफरेंट सम्स को अलग अलग फ्रेम में भी कर सकते हैं, जैसे कोनिकल पेंडुलम. आपने कुछ लिखा था सर, एक सेकंड कॉपी करना था. ओ ओके सर, डन. थैंक यू सर. अब जो है इसमें कोनिकल पेंडुलम, तो कोनिकल पेंडुलम वाला क्वेश्चन फिर से ऐसे करते हैं. कोनिकल पेंडुलम, यस गाइस, कोनिकल पेंडुलम में नहीं बताओ, इसमें नॉन इनर्शियल फ्रेम में करना है. सॉरी, ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम वी आर सॉल्विंग इन नॉन इनर्शियल फ्रेम. सो कोनिकल पेंडुलम नॉन इनर्शियल फ्रेम में यू वांट टू सॉल्व ये ऐसा एंड से इधर दिस ये फ्री बॉडी डायग्राम. पहले तो रियल फोर्सेस दिखा लो भाई, क्या क्या है. mg and this angle is theta naught. Normal reaction. अरे नहीं, ग्राउंड तो इधर है ना. अरे this is ground. Sorry. Okay. And here T cos theta, T sin theta. yes, if you want to resolve this real force, t cos theta naught and t sin theta naught. So this is t cos theta naught, t sin theta naught. अब ये हो गया t cos theta naught, t sin theta naught हो गया. अब ओके, रियल फोर्सेस हो गए. अब हाँ, अब सूडो फोर्स भी शो करना है. गाइस, सूडो फोर्स किधर शो करोगे? Sir, opposite to t sin theta naught. Sir, away from the center. Yes, this is center. Opposite to the t sin theta. Opposite to the centripetal force t sin theta. Yes, sir. Mass of the object, acceleration of the frame r. Frame has radial acceleration, so m omega square r या जो भी है आपका mv square by r, whatever. Now in this frame the object is at rest, so now we'll apply Newton's law in vertical direction. So vertical direction में क्या जाएगा? t cos theta naught minus mg is equal to m into 0. Even in radial direction, this object is at rest with respect to this non-inertial frame observer. So t sin theta naught minus fps is equal to m into 0. This object is at rest with respect to this observer. So t sin theta naught is equal to the centrifugal pseudo force t sin theta naught, and the pseudo force is m omega square r. Same two equations we got. अब इसको solve करना है तो you एक के नीचे एक रख के you divide it and you will get the same answer, guys. ये वाला understood students? ये वाला? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So could you give some questions based on this?
ओ नहीं, जब जो जितने भी सम्स हैं वी डिड सॉल्व, इसको जो है ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। आई एम पॉइंटिंग इट आउट। So Okay. why they have taken in radial direction zero acceleration? ओ नहीं, यहाँ पर दिस इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम, सो Yes, sir. in this non-inertial frame, the object will appear to be at rest. Yes, sir. Appear to be at rest with respect to non-inertial frame observer. So here the particle is moving with like angular velocity, right? Here particle is moving with, हाँ जैसा भी है angular, हाँ angular जो भी है v दिया रहेगा या angular speed दिया रहेगा, correct, हाँ। चलो ठीक है, फिर ये वाला हो गया गाइस। नाउ सर हाँ सर खाली एक चीज पूछना था कि यहाँ पे relative acceleration is zero, right? relative acceleration is zero, हाँ करेक्ट। इसलिए रेडियल एक्सेलरेशन रेडियल डायरेक्शन में जब हम निकाल रहे हैं तब हम m into 0 करते हैं ना? यस यस, रिलेटिव जीरो मतलब हर डायरेक्शन में जीरो, रेडियल में भी जीरो, टेंजेंशियल में भी जीरो। Yes, I got it. Thank you. अब जो है इसमें ठीक है, यू कैन डू दिस क्वेश्चंस इसमें। जैसे गाइस ये भी कर सकते हो, लेट्स से वो डिस्क वाला जो हम कर रहे थे कि ठीक है वो रोटेट हो रहा था, ये क्वेश्चन जो था ना, लाइक विद दिस वी डिड वन क्वेश्चन। ये डिस्क है और ये डिस्क के ऊपर एक कॉइन, शायद पहला क्वेश्चन था। ओके कॉइन, इट्स अ रफ डिस्क। सो ठीक है, इसमें यस इसके एफईडी में फोर्सेस क्या क्या दिखाओगे भाई यहाँ पर? एंड दिस इज रोटेटिंग विद सम एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट व्हाटएवर। हाँ गाइस, रियल फोर्सेस mg and normal reaction या vertical force by the disk surface n, or it is a case of UCM. AT is 0, there is AR, so there must be radial force. Guys, radial force कौन सा आ जाता है? Friction, right? Yes, Friction sir. force. So we are taking non-inertial, right? Oh, okay, sorry sir, ठीक है, I will write non-inertial frame. हाँ, non-inertial frame में जो है there will be a pseudo force away from the center. Yes, sir. And that will be equal to mass of the object, acceleration of the frame in radial direction, and this is radial direction में actually ये हो जाएगा m omega square r. In this non-inertial frame, object will be at rest, the vertical direction में n minus mg is equal to m into 0. In radial direction, ठीक है, in radial direction क्या आ जाएगा? f minus fps. A relative is 0 in this frame. So f is equal to fps, which is equal to m omega square r या mv square by r. Correct guys, ये वाला? चलो ठीक है, फिर जो है now Wait. okay
Sir, done. डन, ओके ओके. सो गाइस अभी जैसे चैप्टर कौन सा चल रहा है? सर्कुलर मोशन, फिर वर्क पावर एनर्जी, फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सेंटर ऑफ मास, फिर मैकेनिक्स का लास्ट वाला टॉपिक जो है इसका मैकेनिक्स वन का रोटेशन. So Guys, gravitational is not considered as mechanics, so it's different. हाँ मतलब वो थोड़ा सा एक हो गया, लेकिन इसमें ले लेते हैं मैकेनिक्स में ही. हाँ Sir, simple harmonic motion. That acts as a bridge between mechanics and waves. So that bridge will take us from mechanics to waves. Waves. Okay, sir. Okay. So guys, ये वाला जो रहेगा guys, इसमें ना आप पढ़ोगे there is rotation motion में आगे. हाँ, rotation में आप पढ़ोगे. तो रोटेशन में जो है जैसे ये सपोज ये डिस्क है ऐसा. हाँ, डिस्क साइकिल का टायर मान लो. डिस्क अगर इसका सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है, सो जैसे प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशन मतलब स्ट्रेट लाइन. हाँ, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में ना, सो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में से यू हैव अ डिस्क. तो जैसे ये डिस्क आगे जा रहा है, तो लेट्स से इफ यू मार्क पॉइंट्स हियर, से पी क्यू, से पॉइंट्स ऑन द डिस्क. हाँ, पॉइंट्स ऑन द डिस्क मार्क करोगे. अगर डिस्क के सेंटर की स्पीड v नॉट है, इस पॉइंट की भी v नॉट रहेगी. सीधा स्ट्रेट लाइन मोशन है भाई. इसका भी v नॉट, Yes, sir. इसका भी v नॉट, इसका भी v नॉट. राइट? डू यू एग्री गाइस दिस वन? Yes, sir. Yes, sir. Straight line, each point on the motion will have the same velocity. से अगर मान लो दिया है प्योर रोटेशनल मोशन, Sir, not same. सो रोटेशनल मोशन में क्या होगा? सोचो गाइस, ये साइकिल स्टैंड में खड़ी हुई है, राइट? वो जो साइकिल, Tangential. Every point is tangential. Sir, center will go faster than the outer side. no, see, साइकिल इज इन स्टैंड. जैसे वो जो मिल्क वाले भैया की साइकिल होती है ना, वो वाली साइकिल इज इन स्टैंड. एंड से वी हैव दिस, ये स्टैंड में है और ये घूम रहा है साइकिल, इसका व्हील. तो यस, थ्रू एवरी पॉइंट विल हैव Tangential. Yes, sir. tangential velocity. ये ऐसा घूम रहा है ना भाई, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर होगी. Yes, sir. इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर होगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी. गाइस, ये वाला सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. नाउ व्हेन साइकिल इज इन मोशन, साइकिल क्या हो रहा है? मूव कर रहा है. तो क्या हो रहा है? You will have So it has both translational and tangential velocity. So combined translational and rotational motion. Guys, ये ला आगे पढ़ोगे. हाँ, don't worry about this. ये तो पूरा डिटेल में जो है we'll be teaching you later on. अभी जो है थोड़ा सा एक कंसेप्ट बताना था, इसलिए मैं पढ़ा रहा था. अब देखो, जब दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो इस पॉइंट पर यार ये जो है रोटेशनल मोशन में कितना आता है यार? ओमेगा आर आता है ना. और इसका एंगुलर वेलोसिटी मान लो ओमेगा है भाई, इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. यार वेलोसिटी क्या होगी? टेंजेंशियल स्पीड आर ओमेगा ना, ओमेगा आर. Yes. So I have a doubt. ये और ओमेगा आर. यस, हाँ. So the velocity at the center will be 0, right? यस, सेंटर की वेलोसिटी 0. यस, करेक्ट आरगी. ये अंडरस्टूड ना? Yes, sir. हाँ, वो सेंटर फिक्स्ड है और साइकिल को घुमा रहे हैं. साइकिल स्टैंड में खड़ी हुई है और साइकिल को हम चला रहे हैं. ये मतलब आई मीन व्हील को रोटेट कर रहे हैं. तो ये वेलोसिटी है. सीमांत यहाँ तक अंडरस्टूड है? Hello. So what is the difference between first and third case? दोनों में तो साइकिल चल रहा है. अरे रुको अभी, अब जो है फिर थर्ड केस में क्या हो रहा है? साइकिल आगे भी जा रही है और रोटेट भी हो रही है. मतलब टायर स्किड भी हो रहा है, घूम भी रहा है. हाँ, ऐसा वाला कब आएगा? ऐसा वाला वंश क्या, ऐसा वाला सिचुएशन कैसे सिमुलेट करोगे तुम? एकदम साइकिल स्पीड में लाना, स्ट्रेट रोड रखना, स्पीड में लाना और पूरे ब्रेक्स को दबा देना. Sir, take the second case and add a V naught to all of them, all of the अरे points. रुको. So he wants to generate it practically. देखो वंश,
पहला वाला केस में क्या करना, एक अच्छी सी स्ट्रेट रोड पकड़ना, हाँ स्ट्रेट रोड और मान लो प्रॉपर कंक्रीट का पेमेंट, साइकिल को अच्छे स्पीड में लाना और साइकिल के ब्रेक्स दबा देना। तो साइकिल का ब्रेक जैसे दबाओगे तो उसका रोटेशन बंद हो जाएगा, यू एग्री? हाँ यस सर। तो रोटेशन बंद हो जाएगा, तुम्हारी साइकिल कैसे होगी, स्किड करेगी कि नहीं आगे? हाँ सर। यस सर। तो ये वाला केस ये वाला हो गया। और ये वाला कब है, जब मिल्क वाले भैया की साइकिल को हम स्टैंड में लगा के और चलाएंगे, राइट? ऐसा होगा, करेक्ट ना? अब ये वाला केस कब आएगा, जब जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम प्रॉपर साइकिल चला रहे हैं, रोटेट, हम तो हमारी साइकिल क्या हो रही है, उसके व्हील्स घूम भी रहे हैं, आगे भी जा रहे हैं गाइस, यस है ना? चलो अब जो है इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये वाली भी हो जाएगी, ये वाली भी नेट एड अप हो जाएगी कि नहीं, रोटेशनल इफेक्ट और ट्रांसलेशनल इफेक्ट। तो v नॉट प्लस ओमेगा आर, इस पॉइंट का क्या हो जाएगा, v नॉट इधर और ओमेगा आर नीचे। ये गाइस ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वी नॉट आप बस ऐसे ही नॉर्मली पढ़ा रहे हो ना, तो- बाकी तो आगे पढ़ाना है इसको। यस यस यस, ये तो पढ़ाना है आगे, बस बता रहा था। मुझे मेरा इंटरेस्ट ये ग्राउंड के पॉइंट पे है, ग्राउंड के पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? तो वी नॉट माइनस ओमेगा आर। वेरी गुड, v नॉट आगे ओमेगा आर पीछे। अब एक कंडीशन आएगा गाइस, ये हम पढ़ेंगे, उसको बोला जाता है प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग में क्या हो जाता है, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो दोनों इक्वल हो गए तो नेट वेलोसिटी इस पॉइंट की कितनी हो गई? जीरो। अरे बाबा देखो, इस पॉइंट की वेलोसिटी, इस पॉइंट का नाम क्या है, क्यू। तो वी क्यू इज इक्वल टू वी नॉट माइनस ओमेगा आर, और दोनों इक्वल हो गए, और ये इक्वल हो गए तो नेट वेलोसिटी जीरो हो गई। यस सर। तो देख रहे हो ग्राउंड का वाला पॉइंट की वेलोसिटी जीरो हो गई, तो दैट मींस ये वाला पॉइंट, और ग्राउंड तो रेस्ट पे ही है, इस पॉइंट की जीरो वेलोसिटी, इस पॉइंट की जीरो वेलोसिटी, तो ग्राउंड और इसके बीच में फ्रिक्शन का नेचर क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। सो पॉइंट Q of tire in contact with ground has zero relative velocity. Therefore, friction by tire, नहीं, friction by ground on tire, क्या बोल रहा हूँ, the friction by ground on tire, if there is of static nature, and this is then in pure rolling. So मुझे सिर्फ इतना समझाना है आपको अभी कि प्योर रोलिंग में क्या होगा गाइस, पॉइंट रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगी और फ्रिक्शन का नेचर कैसा होगा, स्टैटिक। गाइस ये समझ में आ रहा है क्या? सर प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में वो खाली सीधा ही जा रहा है ना? यस, ट्रांसलेशन मोशन में आपने पूरे ब्रेक्स दबा दिए, तो पूरा व्हीकल का रोटेशन बंद हो गया, तो एकदम घिसड़ते हुए सीधा सीधा चला जाएगा, पूरी धूल उड़ेगी पीछे, राइट? और सर रोटेशनल में क्या हो रहा है, वो व्हील हिल रहा है। रोटेशन में आपने जो दूध वाले भैया की साइकिल को आपने स्टैंड पे चढ़ा दिया और बस आराम से घुमा रहे हैं उसको। अच्छा, और लास्ट वाले में दोनों हो रहा है ना? लास्ट वाले में उसके, हाँ, उसको स्टैंड से उतार दिया और वो दूध वाले भैया आराम से साइकिल चलाते हुए आगे जा रहे हैं। ओके, थैंक यू। सर आपने ये जो लिखा है वो फिर से एक्सप्लेन करो। हाँ देखो, इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है, इस पॉइंट की ट्रांसलेशनल इफेक्ट आगे वी नॉट और रोटेशनल इफेक्ट पीछे। तो प्योर रोलिंग वाली कंडीशन में क्या आता है कि ये वाली और ये इक्वल हो जाती है प्योर रोलिंग में, तो ये और ये इक्वल हो गया, तो वी नॉट माइनस ओमेगा आर इक्वल हो गया, तो नेट वैल्यू क्या हो गई, जीरो। मतलब पॉइंट क्यू की नेट स्पीड जीरो हो गई।
तो नेट स्पीड ग्राउंड का तो जीरो ही है, ये भी जीरो, तो दैट मींस देयर इज नो रिलेटिव मोशन। नो रिलेटिव मोशन मतलब फ्रिक्शन का नेचर क्या हो जाएगा, स्टैटिक। ओके सर, थैंक यू। हाँ, यस सर, थैंक यू। तो स्टैटिक का मतलब प्रॉपर लॉक हो रहा है, प्रॉपर लॉकिंग है। हाँ, तो लॉकिंग को विजुलाइज कैसे करोगे? याद है मैंने एक वो बताया था कि जो है वो टैंकर, जो मिलिट्री या टैंकर या जैसा नहीं ना, वेट एरियाज में ऐसा बेल्ट वाला होता है, प्रॉपर लॉक होके जाता है ना। हाँ, वैसा There and also lot of teeth in that. यस, हाँ, उसको ऐसा भी सोच सकते हो कि यस, द Sir, ग्राउंड there हैज are a spikes. teeth. Yes, ground has a teeth, and this your tires, they also have a teeth, और ये टीथ जो है इसके में प्रॉपर लॉक होके जा रहे हैं। आई मीन ये ऐसा विजुलाइज, गाइस, यू आर ट्राइंग, यू अंडरस्टैंड ना व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ऐसा इसका यस लॉक तो होके एक साथ वो ऐसे जो लॉक हो जाता है। यस, लॉक होके इट विल गो अवे। हाँ, सर सिर्फ एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए ही है ना, फिर दूसरा पॉइंट लॉक हो जाएगा? यस, फिर दूसरा आ जाएगा। यस, सो व्हाटएवर पॉइंट कम्स इन टच विद द ग्राउंड वो लॉक हो जाएगा, स्लिपिंग होगी नहीं, तो फ्रिक्शन का नेचर स्टैटिक हो जाएगा। लेकिन ये सब रोटेशन में होगा गाइस, इसका डिटेल में जो है अभी मेरे को थोड़ा सा जो है यूज हो रहा था, इसलिए जो है ये नाम मैं बताना है। चलो, सर थर्ड केस में ब्रेक्स लगाया है क्या? किसमें? सर थर्ड केस में। अरे नहीं, थर्ड केस में कहाँ ब्रेक लगाया है? थर्ड केस में तो साइकिल वाले भैया आराम से आगे चलाते हुए अपनी पैडलिंग करते हुए आराम से जा रहे हैं, प्योर रोल करते हुए। तो फर्स्ट केस जो है उसमें टेंजेंशियल वेलोसिटी नहीं है ना? नहीं नहीं, फर्स्ट केस में क्या है देखो, फर्स्ट केस में सीधा ट्रांसलेशन मोशन है, सिर्फ ट्रांसलेशन है। और जो हमने सेकंड केस बनाया उसमें टेंजेंशियल वेलोसिटी है, इसीलिए वो ओमेगा लिखा है क्योंकि हाँ, फर्स्ट सेकंड वाले केस में आपने इसको सिर्फ ये फिक्स कर दिया है, इसको बांध दिया, इसको खीला ठोक दिया है, यहाँ पर ये फिक्स हो गया, एंड दिस इज रोटेटिंग। चलो ठीक है, फिर जो है सर वेट कॉपी करना। ओके गाइस, लेकिन इतना उसको सिर्फ मेरा जो है स्ट्रेस इस पे ही है, सिर्फ ये नीचे वाला पार्ट कि फ्रिक्शन का नेचर स्टैटिक होगा, बस ये इम्पोर्टेंट है। वो पूरा प्रूफ मैंने दे दिया, लेकिन ये वाला प्रूफ फिर से पढ़ाएंगे रोटेशन में। हाँ गाइस, प्योर रोलिंग रोटेशन का लास्ट पार्ट होता है। तो सर्कुलर मोशन कितना बाकी है? सर्कुलर मोशन में अभी तो बाकी है, वी हैव डिफरेंट Sir, almost over, no sir. नो हाउ नो, अभी तो 90%, 80. नो, वी हैव बैंकिंग ऑफ रोड्स, अलग अलग सिचुएशंस बाकी हैं। Yes sir, but the concepts are completed, no sir. No, Only the situation. Okay sir. वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन ना लोग शायद आई गेस उसमें एनर्जी का यूज होता है, तो उसके बाद होगा शायद, वर्क और एनर्जी के बाद। ओके, क्योंकि एचसीयू में इसमें नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर में इसमें आएगा। So guys, when your holidays are starting? The 4th to 7th. Tomorrow onwards. 4th to November. 4th to 7th. So only 3 days holiday. 4, 5, 6, 7. 4 days holidays. Sir, only for IT or both Saturday, for सर दो सैटरडे संडे सर। Yes sir. चालाक है। हाँ सर। Saturday Sunday उसमें आ जाते हैं। So Sir, okay, sir, so only IIT is holiday or also the college is holiday, sir? That we will get to know from college. कॉलेज तो हॉलीडे हो गए ऑफ कोर्स। Okay. now wait 2 minutes. oh, okay, हाँ guys, जिसका इसका हो गया, they can try this question. HCV exercise
ठीक है, इसमें लेट्स डू एक्सरसाइज पेज 114 का द क्वेश्चन नंबर इज फोर्थ क्वेश्चन. ओके, एक्सरसाइज का फोर्थ. सर वो फिर से दिखा वो पेज नंबर. Which one? 114 question. Page 114, question number 4. Done, sir. 114, question number 4 done. Okay. Oh, No, sir. Question not done. This slide. यार इसके पहले गाइस या इसके पहले रुक जाओ, ये वाला करते हैं फिर इसमें वो आते हैं. किया हुआ है ना. Oh, you have done. Oh, sorry. बोला होमवर्क दिया था सर क्या एक मैंने? बार सर क्या है सर, ये फोर्थ वाला एक बार बताइए. सेकंड भी किया हुआ है. पेज 114. ठीक है चलो 28 करो फिर. सर हाँ, सर चाहिए तो क्लास के एंड में मुझे बता देना ना सर. ये Which fourth one? वाला फोर्थ वाला ठीक है. I will discuss. पहले ये वाला कर लेते हैं. हाँ ठीक सर, है, आप ये चलेगा तीनों कर सर. लेते हैं. Let's do this 3 questions and then we'll go there. हाँ, तो सर कौन सा बोला आपने? 21 और क्या? 28, 29, 30 ये करते हैं. ओके सर. So 28th guys, you're on. So 28 में this is the point O and this is in circular motion. Particle जो है is released from point A और A से the particle is moving from A to B ऐसा. Okay, so oh, this is a tunnel kind of thing ना. हाँ, इसमें एक tunnel जैसा है.
और पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम दिस पॉइंट ए और पार्टिकल इस यहाँ पे जा रहा है. Correct guys? Here this is the question. This has the angle theta here. And this r is much greater than this length L. The length LAB r is much greater than length. So time calculate करना है guys. Time कैसे calculate होगा? किस concept से calculate होगा time? Sir, non-inertial. Yes, time will be calculated from kinematics. Yes. Kinematics. Second equation. Kinematics. Kinematics से okay. So kinematics से use करोगे S is ut plus half t square. And this S किसके S कौन सा लोगे? S is L, right? Yes, sir. Yes, sir. And that is L is The length of AB. Yes, so that will be, that is pointing out कि वो relative हो जाएगा. S relative is L, right? Yes, sir. So relative. So which frame we should solve? Right? We must. Non-inertial. Okay, non-inertial frame. Non-inertial frame. Okay. Sir, but it will become a problem, no, sir. Why? Sir, because different points will be moving with different acceleration, different velocity. In the non-inertial frame, what do you have to show? Sir, which one is rest or which one is moving? No, it's like this. See, now let me draw the top view. Guys, Yes, sir, got it, sir, got it, sir. Both are at rest, sir. mg and normal reaction. Guys, mg or normal reaction will be perpendicular to the plane, right? Yes, sir. So we should neglect them. mg or normal reaction is you. Yes, sir. Frame नहीं समझ. Can you So how is this non-inertial? understand the question? As in, मतलब uniform angular acceleration there. So why are we taking a non-inertial frame? Oh, Then non-inertial also there is some acceleration, right? So it's a non-inertial frame. जो है, see, this is rotating. ये जो है यहाँ पर you have this body. देखो ये ऐसा है. This circle radius is r. ये वाला understood बड़ा radius है. हाँ sir. अब जो है इसमें जो है क्या हुआ है? There is a plate like this, right? ये plate भी घूम रहा है. And particle को कहाँ से कहाँ जाना है? इस line के along A to B length में जाना है, right? पार्टिकल को ऐसे जाना है A से B. यहाँ पे there is a groove, गड्ढा है ना यहाँ पर, right? तो पार्टिकल इसके along ही जाएगा ऐसे. तो पार्टिकल AB डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो प्लेट के रेस्पेक्ट में. So that indicates that we have to solve. So we have to solve. So we have to solve this question, this problem in plate frame. Plate is moving in circular motion. Circular motion, therefore it is non-inertial. Therefore, it is non-inertial frame. You all understood, guys? You know? सर वो एंगल थीटा क्या है फिर, मतलब वो किधर है? हाँ, पहले तो ये समझ में आ रहा है ना कि प्लेट का फ्रेम को नॉन इनर्शियल क्यों बोल रहे हैं? यस सर, वो समझा. चलो यहाँ तक. अब इसके फ्री बॉडी डायग्राम में पहले फोर्सेस क्या क्या दिखाओगे? यहाँ पे वो कैबिन मूव कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी के साथ, इसलिए उसे नॉन इनर्शियल फ्रेम बोल रहे हैं ना वो प्लेट. यस, करेक्ट. हाँ. Okay. And this is the normal reaction from the floor. So guys, normal reaction from the floor or mg क्या हो जाएंगे? Sir, Cancel. they're equal in magnitude and cancel each other.
कैंसिल आउट। ओके दिव्य, यू गॉट द आंसर। अब जो है, हाँ, सो नाउ लेट्स सी इसका टॉप व्यू। सो गाइस, टॉप व्यू में जो है विल नॉट बी एबल टू शो mg and n. One will be coming out of the plane, other will be going into the plane. Correct guys? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, तो ये तो हम नहीं शो कर पाएंगे। दिस लेंथ इज स्मॉल, यहाँ मैं काफी बड़ा ड्रॉ कर रहा हूँ। अब जो है ये वाला पॉइंट ए है एंड ये वाला ग्रूव ऐसा है। ये ऐसा। सो अब जो है इसमें, ठीक है, सो पार्टिकल पे जो है नॉन शेल फ्रेम में सूडो फोर्स भी आएगा इस, राइट? सूडो फोर्स कितना Yes, आएगा? sir. दिस इज सेंटर एंड अवे फ्रॉम द Opposite to center. कितना हो जाएगा सूडो फोर्स? m ओमेगा स्क्वायर r। यहां तक किसी को डाउट है? करेक्ट ना? सूडो फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर m ओमेगा स्क्वायर r। Yes, sir. एंड अब सूडो फोर्स को रिजॉल्व करो, इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करो, इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करो। दिस एंगल इज थीटा, तो इधर क्या जाएगा? fps cos Yes, थीटा। cos. सो अब along AB in cabin frame में सॉल्व कर रहे हैं गाइस, न्यूटन्स लॉ। There is only one force. कौन सा फोर्स है? This fps cos theta. So net force, mass into acceleration, which is fps cos theta. Mass into relative acceleration, उसके relative आएगा। fps is m omega square r. So we got relative acceleration as omega square r cos theta. अब kinematics s relative is u relative t plus half a relative t square। यहां से उसके रेस्पेक्ट में उसको छोड़ा है, this is 0, s relative is l half, a relative is omega square r cos theta t square। t निकालना है। Guys, you all understood? Sir, we have considered the same pseudo force over the distance of L because L is much smaller than R, right? Yes, yes, yes. Guys, next ये वाला करना, 30th वाला। Next 30, हाँ, after 28 के बाद 30 करना है। ये वाला everybody understood? Shravani? Yes, sir. U0 के सैम। Oh नहीं, वहां पे तो उसके रेस्पेक्ट में उसको छोड़ा है। You have released the mass Okay. in the cabin. So with respect to the cabin, initial velocity, relative velocity is 0. Okay, sir. सर लास्ट पेज दिखाओगे? एक मिनट लिखना सर है। इसमें r is greater than l का यूज क्या था? अरे उसने अभी पॉइंट आउट किया ना ध्रुव ने, कि देखो जब जो है पार्टिकल जैसे से अभी ए पॉइंट पे है तो उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर क्या हो जाएगा? आर रहेगा। यस सर। जब कहीं बी पे चला जाएगा तो उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर नहीं कुछ और रहेगा ना, राइट? यस सर, r plus x। सो लेकिन आर बहुत ज्यादा है, आर इज मच ग्रेटर देन, तो वो डिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देते हैं। अच्छा ओके सर। पर वो तो तब लेते ना कि जब हम ग्राउंड फ्रेम में कर रहे होंगे, अभी तो अपन ने केबिन के फ्रेम में लिया तो यूज नहीं आता ना एज सच कि r is much greater than l। नहीं, उसको नेग्लिजिबल कंसीडर करेंगे ना फिर वो लेंथ पर, क्योंकि हाँ, r बहुत बड़ा है। आर काफी बड़ा है इसमें। सर मुझे पूछना मतलब कि ये इसी मेथड में समझो l मतलब एक ऐसी वैल्यू जिसको अपन निगलेक्ट नहीं कर सकते, तो फिर क्या मतलब क्या चेंजेस आते हैं क्वेश्चन में? वो वेरिंग हो जाएगा सूडो फोर्स, हर इंस्टेंट पे डिस्टेंस के साथ फंक्शन वेरिंग हो जाएगा। एक वेरिंग आएगा फंक्शन, वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा थोड़ा। अच्छा ठीक।
तो उसका एग्जांपल सर आर बहुत बड़ा है इसलिए हम लोग ने दोनों पोजीशन पे सेम ही लिया ना वो। सेम लिया, यस 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 करेक्ट। तो क्या सेम बोल रहा है, मतलब मेरे को समझ में नहीं आया, मतलब आपने ये जो किया एस रिलेटिव वो वाला समझा, पर और क्या बोल रहा है वो आर के बारे में क्या बोल रहे हैं? ओ आर जो है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर होगा, राइट? हाँ सर। जब पार्टिकल ए पे है तो डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर क्या हो जाएगा, आर ही रहेगा। अच्छा। जब पार्टिकल बी पे है तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर कुछ और रहेगा, आर से बड़ा रहेगा, राइट? पर सर क्या फायदा है उसका, हम लोग को तो ए से बी तक का डिस्टेंस चाहिए ना, सेंटर से बी तक का थोड़ी चाहिए। नहीं सूडो फोर्स में तो चाहिए ना, सूडो फोर्स में ये वाला। ओके। तो सर वो बहुत कम है आर से, इसीलिए हम लोग वो कंसीडर नहीं कर रहे हैं ना। यस, इसको कंसीडर नहीं कर रहे, सिर्फ यही मान लिया, करेक्ट। ओके। थर्टियथ वाला करना है गाइस, नेक्स्ट 30। Okay guys, 1 minute you try this one, 1 minute I'll be back. Yes guys, किसका आंसर आया ये वाला 30th? Sir, I got it, sir. You got it, thumb right? Sir, yes, Yes. sir. अरे हाँ हाँ, okay, how did you get this answer? Sir, first we have to draw the FBD. 30th का top view. Yes, sir, top view, sir. Sir, that's a circle so top of view radius R. So top view में this radius R is very large, a large Yes, radius sir. R. That's a radius R. This And then there's a system of pulleys and that this thing. mg and normal reaction will not be shown in this view. Yes, sir. Okay. So you have like this. This is M2 here. And this is M1 here, okay. So mg, guys, mg Sir, normal it is reaction. given one mass is M and another mass is 2M, sir. Oh, is it? Okay. Yes, sir. In the question it's given. So this is M, this is 2M, okay. Now you want to find the acceleration as seen from the cabin at so acceleration as seen from the cabin. So which frame we have to work? It's a non-inertial frame. Non-inertial. Cabin frame, non-inertial frame. Okay. So free body diagram. What forces you're gonna show? Sir, tension and then pseudo force.
tension, and rightwards, opposite to tension, that is pseudo force. M omega square R, and this is And 2 2m omega square R. So this will be like this. Yes, a dominating force. So like this. Now we have to write the Newton equation. What is the equation on 2m? Sir, 2m omega square R minus tension is equal to 2ma. Newton's law equation on m will be? Sir, tension minus mass into omega square R is equal to ma. Sir, now we have to put the value of T in that first equation. Add it. Okay, sir. So 2m omega square R minus m omega square R is 3ma. 3ma. And then we have to cancel m and m. Oh, A relative. A relative. And we have to cancel all the masses. Okay. Similarly, for tension, we can find out, sir. Tension we can put here and get the value? Yes, sir. So Okay, next guys. question, which question we have to do, sir? 29. 29, okay, sir. So in the 28th one, that AR stands for A relative or A radial? Oh, relative 1 minute. This is relative. So ये नहीं 28. 20 एक मिनट हाँ इसमें A relative लिखना है याद relative हाँ. Now in 28th also A relative here. उसके frame में solve कर रहे हैं. Relative. So your voice is breaking. Oh. Yes, students, next 29. Huh? सर Yes, हाँ. सर आप ये विदाउट टॉप व्यू के बता मतलब टॉप व्यू समझा लेकिन साइड से देखा तो कैसा दिखेगा? साइड में फिर सॉल्व उसको डायग्राम कैसे डायग्राम दिखाना मुश्किल जाएगा ना? सर सॉल्व नहीं करना लेकिन सेटअप समझने के लिए पूछ रहा हूँ. वो सेटअप समझ नहीं आ रहा क्या? हाँ. अरे ये ऐसा है ना देखो इसमें जो है ये सर्कुलर मोशन ये सेंटर और ये आपका इधर एक प्लेट में ये एडवर्ड मशीन और ये 2 मासेस. ओके सर समझा. थैंक यू. ये 2 mg ये दिखाना नहीं है 2 mg और n2 ये नहीं दिखाना है. हाँ n1 दिखाना नहीं है. हाँ सूडो फोर्स दिखाना है अवे फ्रॉम द सेंटर. अरे एक मिनट जाओ ऐसा इसको क्या करो ये ऐसा बना लो इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ना ये व्यू में थोड़ा दिखता नहीं है छोटा. ये 2m हो गया 2 mg नॉर्मल रिएक्शन उस व्यू में दिखाना नहीं था टॉप व्यू में. फिर ये वाला m then you have n1 here pseudo force away from the center fps 2m omega square r fps m omega square r t is this side t is this side. Correct Yala? Yes sir. Oh Priyal, Yala understood? Here is Priyal. Priyal is not there.
चलो ठीक है फिर so now 29th one. Okay, 29th में guys they have given you a top view only, huh? Top view given है. So let us draw the top view only. कार को ऊपर से देख रहे हैं, बर्ड्स आई व्यू. So you have here as the center of the circular motion, center. This like this or and इसमें पहले जो सीट जो था सीट ऐसा है. Okay, the seat was like this, vertical. इसको डॉटेड लाइन से कर देते हैं. पहले सीट ऐसा था और ब्लॉक ऐसा. तो गाइस इसमें जो है टॉप व्यू में आएगा mg और नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द सीट. टॉप व्यू में ऊपर आ जाए, एक आउट ऑफ द प्लेन, एक इनटू द प्लेन आएगा. करेक्ट गाइस? Yes, sir. Now yours दिया है find the normal force. Oh, normal force निकाल. Okay, नहीं दो चीजें है ना. ये this is the plate here और एक सीट है. नॉर्मल रिएक्शन दो जगह से आएंगे. ओके, आई गेस इस व्यू में क्लैरिटी नहीं आएगा. ओके, दूसरा व्यू चेंज करना पड़ेगा. ठीक है. सो लेट्स से ये वाला व्यू, दूसरा व्यू गाइस. इस व्यू में ना से ये दिस इज योर कार का सीट, एक ब्लॉक रखा हुआ है. तो भाई यहाँ पे उसको पकड़ के रखना पड़ेगा. तो इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पर एक ये लगा दिया ना, एक पुट्ठा जैसा है. सी ये ऐसा. इट्स अ केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो अब इसका जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम में क्या क्या फोर्सेस दिखाओगे? इसमें mg, राइट, नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द सीट. इसको लोगों ने क्या बोला है यार? दिस इज नॉर्मल रिएक्शन, वर्टिकल वाला जो है नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द सीट हियर. एंड दिस इज द प्लेट. गाइस प्लेट का भी नॉर्मल रिएक्शन आएगा. किधर आएगा? Sir, towards the center. यस. अरे प्लेट का नॉर्मल रिएक्शन नहीं आएगा तो उसको रेडियल फोर्स कौन होगा उसके लिए? रेडियल फोर्स नहीं होगा तो रेडियल एक्सेलरेशन कैसे होगा? यस. अब जो है नाउ इट्स योर चॉइस. यू वांट टू वर्क इन नॉन इनर्शियल फ्रेम में सूडो फोर्स दिखाओ भाई. तो सूडो फोर्स किधर दिखाओगे इसमें? तामराइन away from the center. Away from the center. Pseudo force, centrifugal force, mv square by r. Guys ये वाला और n from normal reaction from the seat mg हो जाएगा. हाँ. So क्या निकालने को बोला है? देखो नॉर्मल रिएक्शन किसका पूछा है? प्लेट का नॉर्मल रिएक्शन या नीचे सीट? Seat and plate are two different things here. Said sir, they didn't ask normal reaction. Oh. They asked the angle at which the friction lock will break. Oh. Or will start sliding. It is written that thermal contact exerted by plate on the block. That is written. Okay. I didn't see it properly. ये part है. सर यहाँ पूछा क्या, यही नहीं समझा मुझे. बी वाला पार्ट तो बिल्कुल ही नहीं समझा. क्या? फर्स्ट पार्ट अंडरस्टूड ना? हाँ सर, पर तो फ्रिक्शन नहीं रहता ना.
फर्स्ट ए पार्ट वाला वाले हो में गया. ओके, सेकंड वाले में जो है वो यू आर आस्किंग अबाउट द सेकंड पार्ट. ठीक है, तो सेकंड वाले में क्या कर रहे हैं यहाँ पर. सर फर्स्ट पार्ट हो गया. ए पार्ट में क्या निकालना था, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स. गाइस ए पार्ट मैच हो रहा है कि देखो, इज ए पार्ट मैचिंग आंसर. Yes, sir. इससे क्या जाएगा ना, एक मिनट, क्या जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द प्लेट इज इक्वल टू FPS is equal to mv square by r. Mass is mass of the block 100 grams into omega square r. Yeah, v square by r whatever. क्या क्या गिवन है गाइस, यहाँ का स्पीड वगैरह कुछ गिवन है, इसके लिए क्या गिवन है, 36 किलोमीटर पर आवर. 10 meter per second. So we have to convert it into 10 meter per second. mv Sorry, 10 square by meter. So 5/18. ओके, सो ये कितना आता है आंसर वंश इसका? Sir, 10. 0.2. ये 10 आता है, ये पॉइंट Sir, I 0.2. mean that velocity, sir. Velocity. Oh. So 0.2. 0.2. ये गाइस ये वाला हो गया. यस सर. चलो ये हो गया ए पार्ट. बी तो पार्ट, यहाँ पे mv स्क्वायर बाय r मास किसका है वो? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ओनली ऑब्वियसली. ब्लॉक ना. हाँ सर ये 5/18 होगा ना, 36. Yes sir, 5/18 है B का. हाँ यस यस. श्रावणी कौन सा वाला नहीं समझ में आया? सर बी में पूछ क्या रह गई, नहीं समझा, मतलब वो विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है जरा. ओके वेरी. सो दिस इज द सीट हियर, ये वाला ठीक है ना, इसमें जैसे ये कार का सीट. हाँ, अब यहाँ पर जो है 1 मिनट. सो this is the center of circular motion, correct? Pseudo force अवे लगेगा इस साइड और बैलेंस हो जाएगा. अब ये प्लेट कैसे रखा हुआ था, प्लेट एग्जैक्टली ऐसा था पहले. अब प्लेट को क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर प्लेट को टिल्ट कर दे रहे हैं. प्लेट ऐसा था ना यहाँ पर, राइट? प्लेट जो है, ये प्लेट ऐसा रखा हुआ था. हाँ सर. अब प्लेट को टिल्ट कर देते हैं. सो प्लेट को टिल्ट कर रहे हैं यहाँ पर. So, जैसे मान लो प्लेट को ऐसा टिल्ट कर दिया, प्लेट को टिल्ट कर दिया आपने, घुमा दिया. या इस व्यू में देखेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लेट का ये ऐसा, राइट? नहीं समझ में आ रहा, प्लेट को टिल्ट कैसे किया? ओके, प्लेट को टिल्ट कर दिया. तो इसका जो है, लेट्स डू इन द टॉप व्यू हियर. पहले ये प्लेट पहले ऐसे रखा था ना. सर एक सेकंड पिछला स्लाइड दिखाइए ना. वो वाला व्यू ठीक नहीं है, थोड़ा सा अच्छे से नहीं आ रहा. इसका टॉप व्यू में ज्यादा क्लैरिटी आएगा. अच्छा ओके सर. अब देखो यहाँ पर, तो आपने क्या किया, इस प्लेट को टिल्ट कर दिया एंगल थीटा से. तो जो प्लेट व्हाइट वाला ये वाला प्लेट था, ये इसका टॉप व्यू. हाँ, दिस वाज अ टॉप व्यू. अभी जो है प्लेट को टिल्ट कर दिया एंगल थीटा से. वही गिवन है गाइस, एंगल थीटा से दे हैव टर्न. तो टॉप व्यू में प्लेट तो लाइन ही दिखेगा, ऊपर से देखेंगे प्लेट को तो लाइन ही दिखेगा ना. यस सर. चलो, नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द सीट, नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द सीट और mg शो मत करना इस व्यू में. तो इस व्यू में क्या शो करोगे, नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द प्लेट. तो नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द प्लेट क्या हो जाएगा, प्लेट के परपेंडिकुलर ही होगा. प्लेट ये पीला वाला प्लेट है, सो इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा. दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द सीट. नाउ you all understood? Pseudo force away from the center. This is the center, this is the particle. Pseudo force will be away from the center. Sir, I am getting confused whether we have to
how to sir, actually I did it in the other way. Wait 1 minute. अब देखो ये नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द सीट और ये सूडो फोर्स हो गया। गाइस यहाँ तक किसी को डाउट? 3 पॉइंट डायग्राम में क्वेश्चन में मतलब समझा नहीं, नॉर्मल टू द प्लेट मतलब क्या? नहीं ये यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द प्लेट कौन सा था? तो हमने बनाया ना रेडियस के अलावा। नहीं यहाँ पर ये नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द प्लेट होगा पहले। हाँ सर, जो ऊपर वाले में बनाया रेडियस के अलावा। प्लेट को रोटेट करेंगे, पीला प्लेट को रोटेट करेंगे तो पीला प्लेट का नॉर्मल भी रोटेट हो जाएगा। सो नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द प्लेट ऐसा हो जाएगा ना, राइट? यू ऑल अंडरस्टूड? जैसे आप जैसे प्लेट है ना, वाइट प्लेट का नॉर्मल उसके परपेंडिकुलर, प्लेट को रोटेट किया तो नॉर्मल भी वैसे ही रोटेट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आ गया। अब फिर देखो गाइस, सूडो फोर्स पहले जो है, पहले कैसे था? सी यहाँ पे, हाँ, इन द फर्स्ट केस कैसा था कि जो है दिस वाज द सेंटर हियर एंड दिस वाज द प्लेट। ये नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द प्लेट एंड दिस वाज द सूडो फोर्स। यहाँ पे प्लेट ये पार्टिकल फंसा हुआ था, इस तरह नहीं कि पार्टिकल को, ये प्लेट को पेनिट्रेट करके बाहर आ जाएगा, नो, प्लेट उसको रोक के रखा हुआ था। इस केस में क्या होगा गाइस? यहाँ पर आपने प्लेट को रोटेट कर दिया। सो 1 मिनट, अभी प्लेट को रोटेट कर दिया तो गाइस सी व्हाट इज हैपनिंग। सूडो फोर्स का जो है, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज आल्सो थीटा, दिस विल बी 90 माइनस थीटा। नाउ देखो सूडो फोर्स के दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे लाइक दिस। सूडो फोर्स का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा FPS sin थीटा, सर cos थीटा, oh sorry cos थीटा, and pseudo force का the other one will be this one, FPS sin theta. FPS sin theta. Now pseudo force का ये component आ गया। Normal reaction from the seat, वो अभी जो है नॉन इनर्शियल फ्रेम है गाइस, नॉन इनर्शियल फ्रेम में एवरीथिंग विल बी एट रेस्ट। सो सभी रेस्ट पे हैं, तो नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द सीट is equal to FPS cos theta, you will say. But FPS sin theta को कौन बैलेंस करेगा? Along the, this is the plate here. This is your plate. FPS sin theta is causing the particle to move along the plate. Which force will come now? सर फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा? सर opposite to FPS sin theta. Okay, so opposite to FPS sin theta. फ्रिक्शन, अभी बॉडी मूव नहीं कर रहा है, मूव करने वाला है, मैक्सिमम फ्रिक्शन। So maximum friction from the seat. So normal reaction from seat and normal reaction from plate will be the same, right? Oh sorry, ये तो प्लेट का होगा ना, सॉरी ये तो प्लेट का है ना। हाँ, तो वही कंफ्यूज हो रहा था। ओके ठीक है ना। नॉर्मल सीट में भी लिखा है सर। सीट तो सीट ना, सीट इज जो है देखो ये वाला जो है प्लेट वर्टिकल आ जाएगा तो फिर टॉप व्यू में नहीं दिखेगा। yes, this will be the plate. Mu into normal reaction from the plate. सर पर आपने FS max ही क्यों लिया? नहीं, वहां पे पूछा है ना, फाइंड द एंगल, बॉडी विल जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग। ओके सर। हाँ, बॉडी का मोशन जस्ट होने वाला है। हाँ, अब गाइस अलोंग द प्लेट क्या इक्वेशन लिखेंगे? अलोंग द प्लेट FPS is equal to FS minus FS max is equal to mass into 0. FPS sin theta is equal to FS max आ जाएगा, माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0 कर देंगे। बेसिकली उससे इक्वेशन क्या बनेगा? FPS sin theta is FS max। फिर अब ये आ गया, फिर जो है आप यहाँ से जो है उसको क्या करोगे? FPS sin theta FS max कितना आया था? म्यू इंटू एन।
म्यू n का कितना आ गया था fps cos थीटा fps sin थीटा ये वाला ये गया तो इससे tan थीटा इज इक्वल टू म्यू आ गया फॉर दिस डेटा और म्यू की वैल्यू कितनी है 0.58 tan theta is 0.58 which is same as this value 1.732 by 3. This basically this is Sir, these type of calculation will not be expected from us, no sir. Tan theta no Tamrai, why calculations you are saying? No sir, that able to find this and all, okay. this won't be expected, no sir. You know, Won't be expected. They will give use tan 30 is equal to like that or something. Yeah, they will give you the option, no, tan inverse of 0.58. Okay, sir. Aisa they will give. So what's the next question? Oh, next question, you can try. Somebody was saying that the distance varies. You are saying, now try solved example 13. Next is page 111. Solved example 13. Here we got the value of theta. Now we have to substitute it and find the acceleration. यहाँ पे acceleration नहीं, यहाँ पे तो body rest पे, body is at relative rest. So we want to find the angle कि angle का ये वाला angle plate को कितने angle से turn करेंगे तो body will just begin to move. Shravani wala understood? sir. In this, we would have directly used the formula, that concept of angle of repose. अरे angle of repose तो angle of inclined plane में होता है ना, यहाँ पे कहाँ से आ गया? Sir, but there is no inclined plane. We have to solve. Correct, Divya? Yes, sir. So can you explain the 30th one in short? 30th वाला question. हाँ. और 29th understood ना? Yes, sir. 30th वाला 30 वाला ओ ये वाला क्वेश्चन में डाउट है क्या? हाँ. Samray, how did you do this 30th one? Sir. No. Yeah, sir. Actually, in this we have to take non-inertial frame because we are observing from inside the cabin. So, so in this pseudo force are taken into account. So in this pseudo force, actually it starts from rest. Actually, it placed inside the cabin, and now for the block M, pseudo forces M. That's a W square R. Omega square R. Omega square R, and tension is opposite to that. So we'll write the equation that T minus M omega square R is equal to MA relative. And for block 2M, tension is left side, and tension is towards the center, and that pseudo force 2M omega square R is away from the towards the center. So we'll write the equation for that also. So the dominating forces for 2M. So 2M omega square R minus tension is equal to. So, but then like it should be mg right down. No, it is horizontal. तो mg नहीं आएगा, mg जो है C1. That is in vertical. It is horizontal. mg ऐसा आएगा 2 mg and normal reaction from the plate is like this, right? है ना? हाँ, तो ये pseudo force रहेगा in the plane, right? This one, either and this side. mg will be perpendicular to plane. Top view में mg नहीं दिखाएंगे? So मैं confuse हो गई थी कि वो mg like वैसे ही है. Oh, okay.
Sir, should I explain or she got that, sir? I got it. Thank you. But हाँ Okay. ओके गाइस, फिर कौन सा कर रहे हो? ये कर रहे हो ना होमवर्क के लिए? यस, होमवर्क ना अभी तो ये वाला करो, सॉल्व एग्जांपल 13 होमवर्क एक मिनट जाओ। सर 11:45 होगा। 11:45 हो गया? और 1 मिनट होमवर्क वंश होमवर्क क्या क्या करना है? सब बुकलेट से दे दो कोई। वो बुकलेट नहीं दिया है ना एक भी? ओके 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 1 मिनट। बुकलेट में वंश कौन सा कहाँ तक किया है अभी अपन ने? Sir, we did only 2 questions from exercise 1. Only first question is done. Exercise for 2 question done, sir. Oh, okay. So जो है, okay, I will give homework now. Like right here. So page booklet का पेज सॉल्व एग्जांपल गाइस आपके कौन से पेज में है? इज इट इन पेज माइन had 11 सॉल्व एग्जांपल 1 which page you have? Sir, solved example 1 we have already done it. No, sir. No, we have not done. Conical surface particle describes page 11 में I have. Sir, that page 7, sir. Oh, sorry. Yes, sir. We are on the same page, sir. 11 क्या? 11 ही ना? Yes, sir. 11. Yeah. Page 11 में guys you have ना solved example. Yes, sir. Yes, sir. It's there. Example 1. Example 1, 2, and Sir, 3. 1, 2, 3 is a vertical circular motion. Looks like vertical circular motion. No. So, but it looks like horizontal, sir. That. No, it's a simple pendulum kind of thing, ना? Vertical plane. Oh, okay, sir. फिर जो है 5th, and then Sir, 5th. Oh, okay. then we have 7th. Sir, 8th. Oh, 7th one same Irido question, na guys, which I have given homework. Oh, see 7th. Yes, sir. And 8th. Okay, 8th. And 9th. 10th. And then exercise 1. Exercise 1 में 1 we have done, na guys? 1. Yes, sir. 1 we have already done it. How about 3? 3. Sir, 3 we didn't do. 3, 4th also we have not done, I guess. No, sir. Exercise 1 only first question we have done. 4, okay. 5. 6. 6, then okay, 6. Then okay, we can do this way. 3 to 15. इसमें we can leave. Sir, 13 we have to leave. The Yes, 13. Yes, 13 is vertical circulation. Correct, Amran? And exercise 2, Amran, what is the status? Sir, 2 में कुछ नहीं। Sir, exercise exercise 2 2. में दिया था। Sir, the only 4th question we have done. Exercise 2. So exercise 2, first question. What is the first question? I don't know. Sir, it looks like simple pendulum is fixed. Oh, It looks like conical motion, that one, the diagram. Oh, conical. Okay, chalo, okay. 1, 3. So 5th. 5th, okay. And 6th. 6th.
So 6 also some circular uniform circular motion. Okay. 6, 7. Okay. And exercise 3. Exercise 3 में. So exercise 3 से कुछ भी नहीं दिया है. Oh, exercise 3 we have not Yes, done. sir, कुछ नहीं. So exercise 3 का first we can do, and first 1 to 4. 1 to 4 we have to do. ठीक है, ये वाला जो है, I guess ये banking of rows we have not started. Yes, sir. That exercise 4. Exercise 4. So you are given 5th and 6th. Sir, and also 7th. Oh, okay. That's the 7th also. The 6th, 7th, 5th done, sir. 3. 4th भी देख लेते हैं. We'll try. 5th, 6th, 7th we have done. Okay. Yes, sir. Exercise 5 में. Exercise 5 में ठीक है, we can try 1. So ठीक है, इसमें 3 भी friction वाला लग रहा है. 3 में is only friction is there. And 4th ठीक है, 4th. 5th yes, free body diagram they are asking. Sir, is 3rd that vertical circular motion, sir? Is it related to that 3rd? Oh, okay. 3rd. ठीक है. So, but you can try. They are asking about accelerations. So, acceleration you can find, right? You know, circular motion. What are the directions and what are the accelerations? Yes, sir. ठीक है, guys. फिर ये वाला फिर is it okay? हाँ, somebody please post it in both the groups. हाँ. अरे vacation तक के लिए ना? ये वाला हाँ, vacation तक. Yes. हाँ, vacation तक. So we'll have one more class क्या before vacation? How many classes you're gonna have? The schedule नहीं आया. 0. No. Why 0? We'll be having classes. The schedule नहीं आया अब तक. Oh, okay. Sir, from tomorrow onwards holiday, no, sir. No, sir. 1, 2, 3 में एक दिन हो सकता है. Sorry, sir. 4 तो 1 या 2 दिन तो होगा. 4 से छुट्टी है ना, तो 1 या 2 में हो सकता है. Yes. चलो guys, हाँ. इसका solution भी somebody also please post in the group also. Booklet का solutions or something so that students सर can try. तो नेक्स्ट क्लास के लिए किधर तक करने का? नेक्स्ट क्लास के लिए ठीक है, एटलीस्ट ट्राई करो एक्सरसाइज 1. ये सॉल्व एग्जांपल और एक्सरसाइज 1 एटलीस्ट. ठीक है सर. और ये जो HCV का आपने बोला था ना 13th वाला क्लास में करवाओगे क्या? यस हाँ, विल डू. ओके क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे बिफोर बैंकिंग ऑफ रोड्स. हाँ सर. ओके स्टूडेंट्स, देन विल कंटिन्यू द नेक्स्ट क्लास. हाँ, Bye. Thank you, Okay, sir. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Bye. Thank you, students. Bye. Thank you, sir. Bye, sir.